Hello everyone. I know how much you have been able to engrave it, and probably you have also made some time to invest and read the studies. As I told you that I have been writing about these complex topics also in Kuro. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक brief idea दे रहा हूँ. If you need to go more in detail, you need to study the passage that I have written there in Kuro, and this is written on March 22nd, Art to A with Jaideep. Search it out and read it, positively read it, if you really need to become healthy and happy in life. Friends, we are talking about the 6 causes of sickness, right? आपने पहले 4 एपिसोड में you have learned, in fact 5 एपिसोड में, first one was just an introduction. We talked about disharmony of 5 elements. जो 5 एलिमेंट, इसके बारे में आपको पता ही है, ये 5 एलिमेंट जो हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं, आप उस 5 एलिमेंट की डिसहार्मनी होते तो हम बीमार पड़ते हैं. एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज में हम बीमार पड़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट इम्प्रॉपर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. खाने को रिस्पेक्टफुली खाना, खाने को कभी नेग्लेक्ट मत करना. समझ लेना कि हर खाने के पीछे एक लाइफ है, और उस लाइफ को रिस्पेक्ट करने का 2 तरीके हैं. एक, आप खाने को कितनी रिस्पेक्टफुली खा लो. दूसरा, आपकी लाइफ के प्रति कितना रिस्पेक्ट है. सी, अंडरस्टैंड, आवर लाइफ इज सस्टेन्ड बाय मिलियंस ऑफ लाइव्स, राइट? द फूड दैट यू ईट इज लाइफ, एंड दैट लाइफ इज सस्टेनिंग योर लाइफ. व्हाई? फॉर यू टू लिव लाइफ विद ईगो एंड एंगर एंड एरोगेंस, दैट मीन्स यू आर डिसरेस्पेक्टिंग दैट लाइफ. So how you respect your life is also an outcome of how you are respecting the food. Remember this always. The third thing we talked about, inappropriate practice of seated meditation, right? इसमें हमने 2 एलिमेंट की बात की थी. एक आपकी एक्शन, एक आपकी थॉट्स, राइट? आप कैसे एक्शन लेते हो, आप चलते कैसे हो, आप कितनी बोल्डली एंड पावरफुली चलते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अप्रोच, एटीट्यूड कैसा है. एंड दूसरा चीज है थॉट्स. क्या आपकी माइंड में क्या चल रहे हैं. I introduced here there saying that it is very important to understand the principle of R2A, respect, regard and acknowledgement. क्या वो respect है आपकी mind में, या you are always jealous about everybody else? That's the meaning of inappropriate practice of seated meditation. We studied up to this much. Now we will talk about the 4th one. Now as we move towards the next 3, it is absolutely more complex than the first 3 we talked about. It is easier to understand, but I will try to explain you in an easy language and motivate you to read the passage that I have written in Kuro. This is called act of demon, the 4th cause of your sickness. आप बीमार पड़ते हो. अभी तक हमने 4 causes यहाँ पे पढ़े. This is the 4th we are discussing. 6 में से act of demon आपको समझना चाहिए. इसकी देखिए 2 सिंपल प्रिंसिपल है. एक तो बहुत आसान है समझना, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना. तो पहले आसान वाला समझ लेते हैं, राइट? एक्ट ऑफ डेमन में हमारे एक्सटर्नल अटैक. बीमार हुए हो कभी? कभी आपको वायरल अटैक हुआ है, कभी बुखार आए हैं, कभी फीवर आए हैं, या बिगर डिजीज, जॉन्डिस, tuberculosis. All these are what? These are external attack of various virus and bacteria on us. We are attacked by such things and we fall sick in our life. Obviously, to overcome those sicknesses, you need to go for the medication and what. ये हो सकते हैं. हम जब क्लाइमेट में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, कोविड के टाइम बहुत लोगों ने बीमार पड़ा था. आपको ये अटैक हो सकते हैं, और इस अटैक को हमें ओवरकम करना पड़ता है. देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग. इट इज इजियर टू ओवरकम दिस अटैक इन लाइफ, बट एक्ट ऑफ डेमन की एक सेकेंड एलिमेंट है जो हमें तोड़ के चले जाते हैं. And you must understand this second element, and this is called 3 enemies. ये कौन होते हैं जानते हैं? देखिए, डिटेल में तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, because it will then become a very long video for you. 3 enemies are arrogant people that we see. The 3 enemies are the set of 3 sets of arrogant people. एक कौन होते हैं? जो common layman होते हैं. आपको always arrogant people, रास्ते में road rage, ये वो, it's all sign of arrogance, right? These are arrogant people who faces and which creates an act of demon on you, and you suffer from them. The second set of 3 enemies is people who have got influence on you. We sometimes meet bosses, workplace में, supervisors, or environment में. Sometimes some people may say my parents, my partner, my people who has an influence on your life. If they work with an arrogant manner, that influences our life.
and makes us fall sick. But the third type of enemies that we face is actually the most powerful enemy that we have to encounter and overcome. See, I sometimes feel so miserable about the people who are suffering in this war zone. There are set of people who are extremely arrogant and they're very powerful. They're sovereigns. They're very powerful. Their actions may be driven by, they may not be influenced at all. They may be staying in the most protected zone. They have got all types of protection around them. But very common people suffer out of the act of this demon, attack of these three enemies. These are called three sets of arrogant people. Incidentally, हमारे लाइफ पे ना कहीं हम ये तीनों सेट ऑफ एरोगेंट पीपल को फेस करते रहते हैं और ये हमारे रूट कॉज ऑफ सिकनेसेस की एक कारण होते हैं. इनके लिए हम सिक हो जाते हैं. आप फेस कैसे करोगे इनको? हाउ विल यू फेस देम? हाउ डू यू फेस देम? सी, अप टू दिस मच इट्स इजियर, राइट? व्हेन यू आर अटैक्ड बाय सच वायरल इन्फेक्शन एंड ऑल, ये होगा. आप जब एनवायरनमेंट में रहते हो आपको कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, कभी कुछ. Trust me, it is very easy to overcome them. They are not to, I'm not saying you should not take care of it or you should be negligent about it, but I am saying it's not something we should be overly worried about of the reason of sickness. What we should be overly worried about these three enemies that we face in our life. So in this message, I have given some example of people. The example of Jesus, right? What did he face? But मैं आपको एक बात बताता हूँ. ये जो तीन enemies हम इसको face करते हैं ना, ये ओवरकम वो आदमी करते हैं जो अपने अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है, अदरवाइज इसको फेस नहीं कर पाते हैं. सो आई हैव रिटन इन दिस मैसेज, eventually we live a life of fear and there we are constantly get abused by our environment in way of making us feel weak. Such life are prone to lose life force, hence we will show inability to find the physical sickness. ये क्या करते हैं? ये हमारा लाइफ फोर्स को ले लेते हैं. तो आपको क्या नहीं जाना है? आपके एनवायरनमेंट में जब ये तीन एनिमीज को फेस करेंगे, व्हाट इज इट दैट यू शुड नॉट लेट गो फ्रॉम योर लाइफ? द लाइफ फोर्स. लाइफ फोर्स रखना आसान नहीं है. ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बहुत डिफिकल्ट है, बट इसी को रखना पड़ता है. एंड यू नो हाउ यू कैन कीप इट? द प्रैक्टिसेस दैट यू डू, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द अदर टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस दैट यू आर डूइंग, प्लीज डोंट डू इट लाइक ए बेगर. वहां पे जाके भीख मत मांगो. वहां जाके अपना करेज को डेवलप करो, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो. अगर आपको थ्री एनिमीज को एनवायरनमेंट पे फेस करना है तो आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा. यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. यू हैव टू बिलीव दैट. Again, come back to my basic principle which I'm trying to teach to all of you or to me. Develop that respect for yourself. Develop that regard of your situation, that this situation of mine will help me overcome my weaknesses. It will help me to find the purpose of my life and acknowledge the fact that you are born in this world as a human being. I will not let it go waste. You know, Steve Jobs ने एक बात बोला था and I touched my life a lot. Steve Jobs ने बोला था, if you are born poor, that's not your fault. But if you die poor, that's all up to you. Here, poor doesn't mean money. It's a state of mind. If you die with that regret, that hatred, that sense of rejection in your life, तब क्या ही life जिए हम? Please live properly. Please live happily. Please live with the ability to fight the attack of demon on you. Right? Thank you very much, guys. Wait for the 5th and the 6th one.